Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So, from class 12th Business Studies, from the chapter of planning, this is our third lecture video. Today, we will be studying the limitations of planning. As you all know, in the board examination, the total weightage of this chapter will be of approximately 6 marks. The topics to be covered in this chapter are meaning of planning, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. ये दोनों टॉपिक हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उन्हें देख सकते हैं. एंड इवन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हैड ऑलरेडी बीन डन. टुडे विल बी स्टडिंग द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. सो हेयर वी हैव टोटल 6 limitations of planning. As we all know, neither of the concept in this world has remained untouched of its limitations or demerits or some sort of drawbacks. Planning, though it is most important function of management, it is the primary function of management, it is the base for all the other functions of management, still it suffers from few of the limitations. What are those? The first one is planning leads to rigidity. Then planning may not work in dynamic environment, in ever changing environment. Then planning reduces the creativity. एक काम बता दिया, आप सब उसी के हिसाब से कर रहे हैं, कोई अपना खुद का पर्सनल क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करेगा. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट मे बी अ expensive feature. Planning is a time consuming process, and planning does not guarantee success. We can just predict, but we cannot guarantee success. Now, all these points have to be taken a detailed explanation as per the NCERT. So let us start. And in case if you are not having the NCERT book of business studies, no issues at all. Go to Play Store and download it for free. But remember that you have to download the latest version, that is 2020-21 वाला latest version आप download करें, and then you can just continue with your studies part without buying any study material for money. Okay, so limitations of planning we have to start here. We are. Let us start with this. We have seen how planning is essential for business organizations. We all know that it is most important one. It is difficult to manage operations without formal planning. Obviously it is. It is important for an organization to move towards achieving goals. Obviously the organization must move towards the achievement of goal. But we have often seen in our daily lives also that things do not always go according to plans. So whatever planning you will undergo, still it not at all possible, or it is not at all necessary that all the things will continue according to your wishes and whims. So similarly in organizations also, the planning function suffers from few of the limitations. The first function the first limitation of planning is planning leads to rigidity. Rigidity means the things which is fixed, which is not flexible, which cannot be modified, which cannot be changed. एक बार हमने जब प्लान्स बना लेते हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद में अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई चेंज आता है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक और टू मेक सर्टेन सिमिलर चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली ऑल्सो. एक बार प्लान बना लिया, अब हम ये सोचते हैं कि इस प्लान को पूरा से वापस से चेंज करो, मॉडिफाई करो, इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क. तो ठीक है, जैसा प्लान कर लिया उसके हिसाब से इस साल तो चलने दो. तो ये सिचुएशन क्या आ जाती है? दिस ब्रिंग्स अ सॉर्ट ऑफ रिजिडिटी, कि जो हमने सोचा है बस उसके हिसाब से चल रहे हैं, हम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए रेडी नहीं है. देयर कैन बी मैनी रीजंस फॉर दैट, बिकॉज नया प्लानिंग करेंगे तो फिर से टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, एनर्जी लगेगी. तो उन सब वजह से हम क्या करते हैं, अगर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज भी आया है, वी जस्ट इग्नोर दैट एंड वी move on according to the previous plans. So that is the reason it brings one of the limitation of planning, that is planning leads to rigidity. In an organization, देखें क्या लिखा है, in an organization a well defined plan is drawn up with specific goals.
to be achieved within a specific time frame. These plans then decide the future course of action, and managers may not be in a position to change it. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें उस गोल को अचीव करना होता है, टारगेट को अचीव करना होता है. एकदम से अगर कोई चेंज आ जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा से एक नया प्लान बनाएं. सो हम ये चेंज को इग्नोर करते हुए उसी पुराने प्लान के साथ आगे मूव ऑन कर जाते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन दैट इज़ प्लानिंग ब्रिंग्स रिजिडिटी, जो चीज़ों को एज इट इज़ ही फॉलो करने के लिए हमें मजबूर करती है. लेट अस कम टू द सेकंड limitation of planning, that is planning may not work in a dynamic environment. Word dynamic means ever changing, and we all know, हमने ये characteristic भी पढ़ा है, that is business environment is dynamic in nature. Business environment contains lot of uncertainties. Business environment cannot be predicted with accuracy. हमेशा change होता रहता है. In the month of February किसने सोचा था कि 2 महीने का लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाएगा? तो ये तो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, हमेशा अनसर्टेन होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है. और ऐसे डायनेमिक एनवायरनमेंट्स में आपने जो एक बार प्लानिंग की है, हो सकता है वो फेल हो जाए, हो सकता है वो प्रॉपर्ली वर्क ना कर पाए, बिकॉज आपने जो प्लानिंग की थी वो अपने प्रीवियस एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड की थी. आपने फरवरी मंथ में अगर प्रोडक्शन करके रख लिया था तो ये सोच के कि हमें मार्च और अप्रैल मंथ में हाई सेल्स मिलेगी, लेकिन मार्च और अप्रैल मंथ में तो लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया. ना सिर्फ आपकी मार्केट क्लोज थे तो आपके पास डिमांड ख़त्म हो गई, बल्कि आपके जो वर्कर्स थे वो भी जॉब छोड़ के चले गए अपने विलेजेस को. तो ये सिचुएशन क्या है, अनसर्टेनिटीज़ तो हमेशा रहती हैं बिज़नेस में. डायनेमिक एनवायरनमेंट अगर है तो जो आपकी प्लानिंग है वो पूरी तरह से फेल हो सकती है. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. देखें क्या लिखा है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक. बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ एवर चेंजिंग, डायनेमिक, चेंज होता रहता है. नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट. द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डायमेंशंस. If you remember 5 dimensions we studied: economic, political, physical, legal and social dimensions. The organization has to constantly adapt itself to changes. जैसे जैसे जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको चेंजेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी लाना पड़ेगा. या तो आप लेके आइए, और अगर नहीं लेके आते हैं तो फिर आपकी प्लानिंग फेल होनी ही है. It becomes very difficult to accurately assess future trends in the environment if economic policies are modified or political conditions in the country are not stable or there is a natural calamity. There can be n number of reasons due to which the plans may fail. So this is the second limitation, that is planning may not work in a dynamic environment. Students, keep this thing, remember, NCERT should be the base for all your studies of business studies. So that is the reason I am taking the explanation and the text from this NCERT book only. आपको भी अपने एग्जामिनेशंस में जब क्वेश्चन का आंसर आप प्रेजेंट करेंगे तो हेडिंग्स तो पर्टिकुलर जो NCERT बुक में गिवन है उसी को आप अपना बेस मान के चलें. Let us come to the third limitation of planning. प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी. अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक मैनेजर है, उसमें बहुत सारे उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके अंडर में वर्कर्स हैं. मैनेजर ने प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म किया, टारगेट सेट कर दिए, मेथड सेट कर दिए, किस पर्सन को वो काम करना है वो बता दिया. ओके, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय हुम इट इज़ टू बी डन, ये सब डिसाइड हो गया. अब ये जो सबॉर्डिनेट्स हैं ना, ये उसी प्लान के अकॉर्डिंगली अपना वर्क करते जाएंगे. वो अपना इनिशिएटिव बिल्कुल भी नहीं देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो सोचेंगे ही नहीं, वो अपनी क्रिएटिविटी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे. वो तो देखेंगे हमारे बॉस ने, हमारे मैनेजर ने, हमारे सुपीरियर ने जो भी हमें प्लान बताया, टारगेट बताया, मेथड बताया, उसी को फॉलो करो, अपनी सैलरी लो, घर जाओ. दे विल जस्ट completely ignore using their creativity. So that is one of the limitation, that is planning reduces the creativity. देखें क्या लिखा है, planning is an activity which is done by the top management. However, planning is a pervasive function and it is to be performed at all the 3 levels, at top, middle and lower, but mainly it is to be performed at the top level management. At the middle and the lower level of management only subordinate plans are prepared, only the secondary plans are prepared. The primary function of planning, the main function of planning is performed at the top level only. Okay, now usually the rest of the members at the middle level and the lower level,
just implements these plans. As a consequence, middle level management and other decisions makers are neither allowed to deviate from plans nor are they permitted to act on their own. तो ना सिर्फ उनका खुद का इनिशिएटिव कम रहता है बल्कि टॉप मैनेजमेंट भी बोल देता है जो हमने प्लान बनाया है, जो ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट किया, आप उसी के अकॉर्डिंगली मूव ऑन करेंगे. यू आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान, यू आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई द प्लान, यू आर नॉट अलाउड टू make any sort of change, or you are not allowed to apply any sort of creativity in these plans. So it reduces the creativity. Let us move on the fourth limitation of planning. Total 6 limitations are there. So the fourth one is planning involves huge cost. कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जो बिना कॉस्ट के, बिना मनी के, बिना फाइनेंस के हो जाए. और जहाँ पे प्लानिंग फंक्शन आपको परफॉर्म करना है जिसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल का, हम वही पढ़ने वाले हैं, प्लानिंग प्रोसेस. आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा. सो प्लानिंग का तो एक लंबा पूरा प्रोसेस होता है 5 स्टेप्स का, और उस प्रोसेस को अंडरटेक करने के लिए भी हमें लॉट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ता है. सो द थिंग इज़, फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर द मिडिल ऑर्गेनाइजेशंस, द प्लानिंग may occur to be a expensive project or an expensive function. For example, बहुत एक सिंपल सा आपका एग्जांपल देता हूँ. सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसने बिना कोई प्लानिंग के, और उसको से 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. ओके, नेक्स्ट ईयर एक नया मैनेजर अपॉइंट हुआ, वो तो MBA किया हुआ था, तो उसने कहा भी हम तो एज़ पर द मैनेजमेंट फंक्शंस वर्क करेंगे. उसने प्रॉपर प्लानिंग अंडरगो किया, प्रॉपर प्लानिंग किया, और उसके बाद में उस प्लानिंग का उसके करके जब उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन का ईयर के एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो वो है 12,000. तो अच्छी बात है, पहले फर्म ने 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया था, प्रॉपर मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के बाद में प्रॉफिट जो हुआ वो 12,000 हुआ. लेकिन इसके बाद में जब हमने इवेल्युएट किया कि ये जो प्लानिंग फंक्शंस हमने परफॉर्म किया था इसकी वजह से हमें कितनी कॉस्ट आई थी, तो पता चला 5,000 रुपीज़ की एडिशनल कॉस्ट प्लानिंग फंक्शन पे आई थी. आपको एडिशनल प्रॉफिट कितना मिला? 2,000. एडिशनल कॉस्ट ऑन प्लानिंग कितनी आ गई? 5,000 की. तो फिर फ़ायदा हुआ या नुकसान? अल्टीमेटली तो नुकसान हो गया. सो planning involves huge cost. That is also one of the limitation of planning. When plans are drawn up, huge costs are involved in their formulation. These may be in terms of time and money. Obviously, cost can be in the terms of time and money both. For example, checking accuracy of facts may involve lot of time, and that is the reason the next fifth limitation of planning is the same. That is, planning is a time consuming process. फिफ्थ कहाँ गया? ये रहा. Planning is a time consuming process. Sometimes plan to be drawn up takes so much time that there is not much time left for their implementation. अभी कोई सिचुएशन हमारे सामने आई और अब हम उसके लिए प्लान बनाना, प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं. सो इट मे इन्वॉल्व सो मच टाइम, इट मे कंज्यूम सो मच टाइम कि जब तक वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने का टाइम है तब तक सिचुएशन ही चेंज हो जाए, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक इन नेचर. तो जैसे जब आप प्लानिंग कंप्लीट करें, लॉन्ग प्रोसेस है, जहाँ लॉन्ग प्रोसेस है तो टाइम तो कंज्यूम होना ही होना है, और टाइम कंज्यूम होने में सिचुएशन ये हो सकता है कि जब तक वो प्लान प्रिपेयर हो तब तक सिचुएशन ही चेंज हो जाए और फिर आपको फिर से नया प्लान बनाना पड़े. सो दिस वाज द फिफ्थ लिमिटेशन, दैट इज़ प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. एंड द लास्ट वन, दैट इज़ सिक्स्थ limitation of planning, is planning does not guarantee success. You can just predict the future course of action, you can just take assumptions, but still you cannot guarantee that whatever we have thought, whatever we have just targeted will be achieved as it is. The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने प्लानिंग कर तो लिया है, प्लान्स बना तो लिए हैं, कि उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो भी सब बेकार हो जाएगा. एनी प्लान नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन और इट बिकम्स मीनिंगलेस. सो अनटिल अनलेस यू ट्रांसलेट इनटू एक्शन और इट विल बिकम मीनिंगलेस. यानी जो आपने सोचा है या तो आप उसको पूरा परफॉर्म कर दीजिए, अदरवाइज वो सिर्फ बैठ के प्लान करने से कुछ नहीं होगा, उस प्लान को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है. मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी to rely on previously tried
और टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स। तो नॉर्मली मैनेजर्स यही करते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में प्लान्स बने थे उन्हीं को वो सक्सेसफुल मानते हुए और उन्हीं को अप्लाई कर देते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज़ वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। तो बिकॉज पहले हो सकता है सिचुएशंस कुछ और रही होंगी तो उस समय वो प्लान वर्क कर गया, अब सिचुएशन चेंज हो गई तो प्लानिंग में भी चेंज होना चाहिए। बिसाइड्स देयर आर सो मैनी अदर अननोन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। So this kind of complete complacency and false sense of security may actually lead to failure instead of success. So this was the sixth limitation of planning, that it may lead to unsuccess or failure of the plan. So total in all we have studied 6 limitations of planning. Let us have a quick recap of all these. Here we go. First one, planning leads to rigidity. Once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in a position to change them. You can just even take a screenshot of this page and note down it in your copies also. Secondly, planning may not work in a dynamic environment. Business environment is very dynamic as there are continuously changes taking place. It becomes very difficult to forecast these future changes, and plans may fail if the changes are very frequent. Third one, planning reduces creativity. With the planning, the managers of the organization start working rigidly and they become the blind followers of the plans only. They stop using their creativity, they stop giving any suggestions to the management. Planning involves huge cost. Planning process involves lot of cost because it is an intellectual process and companies need to hire the professional experts to carry on this process, and that involves a huge salary of those experts and it becomes a costly affair. The fifth limitation is planning is a time consuming process as well. Success lot of time consuming process, not success, process है ना, उसको करेक्शन कर लेंगे. Lot of time is needed in developing planning premises. प्लानिंग प्रेमिसेस क्या होता है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक प्लानिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे. प्लानिंग प्रोसेस में जो सेकंड स्टेप होता है वो प्लानिंग प्रेमिसेस होता है, उसको हम पढ़ेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है. एंड द लास्ट वन, दैट इज सिक्स्थ वन, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग ओनली provides a base for analyzing future. Only it provides a base. It cannot guarantee success. It is not a solution for future course of action. So I hope आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर और कोई डाउट बचता है तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं. Now I am, before leaving today's video, I am asking one question to you. Listen to the question carefully and you have to answer it in the कमेंट बॉक्स. उससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपने पिछले वीडियोस में जो भी कुछ पढ़ा है क्या वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया. आपको आइडेंटिफाई करना है. मैं एक सेंटेंस बोलूँगा और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है. लिसन टू दिस सेंटेंस केयरफुली एंड आफ्टर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग. ओके, you have to identify one of the characteristic of planning. Listen to this sentence carefully. Top management undertakes strategic planning and middle and lower management are involved in departmental planning. I repeat, top management undertakes strategic planning and middle and lower management are involved in developmental planning and operational planning respectively. ठीक है, this is the situation. Now you have to tell me which feature of planning function have been shown in this sentence. तो ये कंफर्म हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर. ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने क्या पिछले वीडियोस को ध्यान से देखा, समझा है या नहीं. And for more such videos of class 12th accountancy, business studies and economics, like, share and subscribe to this channel and hit the bell icon so that you will get all the notifications at the most earliest. Thank you.